Good morning, class here. Welcome to Lectures Online class. Presently, we are studying grammar portion, from which lesson 28 is going on. 28. Chapter 28. Synthesis. Synthesis means, I tell you daily, from which day I started to teach this chapter. Before starting any exercise, I remind daily about synthesis. It is combination of the sentences. It is combination of the sentences, and there are three types of sentences are formed by the combination of the sentences: simple, complex, and compound. Directly, we are learning how to form simple sentence. There are various methods, various ways of forming simple sentence. What you have written by instruction. Yesterday I had explained you exercise 1. Today I am going to explain you exercise 2. Open a book. See this exercise being concentrate. Exercise 2. Which lesson? 28. Chapter 28. And exercise second. Exercise 2. I am reading. Please listen. सेंटेंस को सेट को ज्वाइन करना है, करके एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है. यूज क्या करना है? बाय यूजिंग प्रीपोजिशंस विद नाउन्स आर gerund. Noun or gerund. Noun means naming word. Gerund means when ing form of the verb. When ing form of the verb gives us function as noun, that ing form of verb is known as gerund. Because you should know, gerund ing form present participle भी होता है और gerund भी होता है. ing form जब कॉन्टिन्यूअस वर्ब को शो करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वर्ब को शो करता है, तो जीरंड हो जाता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है. और जब वो नाउन का फंक्शन देता है तो वो जीरंड होता है. वंस अगेन, व्हाट इज जीरंड? व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव्स अस फंक्शन एज नाउन, दैट इज नोन एज जीरंड. यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ जीरंड. Now let's start. इसमें preposition. Preposition you know as in, on, at, over, into, so many prepositions. So these are prepositions. Prepositional phrase भी होता है. ये तो preposition हो गया. Preposition. और प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात आती है. ये क्या होता है? जब प्रीपोजिशन एक ग्रुप में आता है, दैट इज नॉन प्रीपोजिशनल फ्रेज. एज, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, spite
ऑफ, ऑन द अकाउंट, ड्यू टू, ये सब हमारे क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है के बजाय, के बजाय, और इसका मतलब होता है के बाजू, व जू, यानी कि के अतिरिक्त। आप कह सकते हो के अतिरिक्त, अतिरिक्त। ये चीज होती है, तो हमें इसका केयर करना है यहाँ पर। Now, I am going to write answers of every question from exercise second. Take your pen and copy. Write it. First sentence. First sentence. It rained heavily. It rained heavily. The streets were flooded. इसका आंसर होगा द स्ट्रीट वर flooded due to heavy rain. Heavy rain. Stop. Second, फर्स्ट का आंसर ये, द स्ट्रीट्स वर flooded due to heavy rain. Second, he is dejected. He is still hopeful in spite of, dejection. He is hopeful. Stop. Third one. I went to Goa. I went to attend a seminar. Going. I went to Goa for attending a seminar. I went to Goa for attending a seminar. Fourth one. She was down with fever. She was unable to attend her classes. Okay. She was unable
attend her classes. Due to fever, due to fever. Fifth one, we must support him, otherwise we must support him, for winning the election. Sixth one, the old man is wealthy in spite of being healthy. He is discontent. He is discontented. Sixth, just I wrote six sentences, answers of 6 sentences from exercise second. You will write it in your fair copy. Okay, and yes, fair copy. ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में लिखना है, बुक में नहीं। जबकि यहाँ पर दिखाया तो बुक में भी मैंने कॉपी में ही लिख दिया है। और एवरी टाइम आई टेल यू, हंसने बताते हैं, कॉपी में जो बुक में लिख देता हूँ कि बुक में रखना है या फिर कॉपी में जाएगा। ये आंसर्स कॉपी में लिखा जाएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।